Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Eid Mubarak to everyone who's watching us today. My name is Zain Goplani. I'm a consultant and a trainer at Funverks Global, and I welcome you all to the BIZVERDS Eid Edition. And आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. हम कल भी मिले थे आप लोगों से जब हमने हमारा ईद एडिशन का वेब खाना चलाया था, और आज मेरे पास तीन बहुत ही अच्छे दोस्त मौजूद हैं. एंड मैं दोस्त इसलिए कहूँगा क्योंकि यस कुछ तो एक तो वाकई में बचपन का ही दोस्त है, और बाकी दो लोगों से काम के साथ साथ जो है वो दोस्ती भी हो गई है. सो ऑफ कोर्स दैट इज देयर एज वेल. आई एम विद मी मिस्टर सैयद शरियार अली. ही इज फ्रॉम KFC पाकिस्तान. अपने बारे में खुद बताएंगे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं. आई हैव मोनिका पीटर फ्रॉम जैज एंड आई हैव उमर फारूकी फ्रॉम एंग्रो पावरजेन. Shariar, I would like to request you first to please introduce yourself to our audience who's watching us. All right, thank you, Zain, for letting me go first. Assalamu alaikum everyone. Eid Mubarak to everyone, panelists and viewers जो हमारा प्रोग्राम में ज्वाइन किया हुआ. My name is Syed Sheryar Ali and I'm working as learning manager learning and audio for KFC Pakistan, whereby I look at the entire learning process pan Pakistan for KFC Pakistan and जितने भी organization development से related काम and initiatives हैं, I look after that. KFC के साथ from the past 2 years से मैं associated हूँ, and but before that I've been exposed to multiple industries. So yeah, that's a little snippet about my introduction. थैंक यू सो मच शरिया फॉर दैट इंट्रोडक्शन. एंड शरिया ने हमें सेकंड टाइम ज्वाइन किया है बिजवर्ड्स में. पहले बार शरिया आए थे, उन्होंने मिलेनियल्स के बारे में बात की थी, और आज शरिया आज हमसे बात करने वाले हैं वे फॉरवर्ड. Thank you for giving me opportunity. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन वंस अगेन. मोनिका पीटर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Assalamu alaikum everyone, Zain, Sheryar, Umar and everyone else who is watching us. First of all, Eid Mubarak to all of you. Besides all the difficult situation, we have managed to come so far. So congratulations to you all. And I'm Monica Peter. Most of you already know me. I'm currently working as an HR business partner at Jazz. Based in Multan, I'm looking after Central Punjab for Jazz. Basically, I belong from Karachi. And I couldn't unfortunately go home on Eid, so I'm here with you all to celebrate that. Prior to Jazz, I have worked in organizations like Coca-Cola, Philip Morris, and I've started with an HR consultancy. So I have a vast kind of experience all over Pakistan. Thank you so much for having me today. थैंक यू सो मच मोनिका. और हम बिल्कुल सुनेंगे कि आप कराची आने वाली थी और नहीं आ पाई, और क्या हुआ उसके बात करेंगे मोनिका. आई नो दैट स्टोरी टू. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उमर फारूकी. Please introduce. Thank you, Zain. First of all, for inviting me, and thank you for having me with such wonderful panelists, Sheryar and Monica. So, guys, I'm Umer Farooqi. I'm working as an HR BP at Engro Powergen Third Limited. I've been associated with Engro for the past 5 years, and have worked at K Electric before that as well. So, like in the energy sector, I've worked for a long time. So, I've looked at learning and development, slight bit of comp and ben. Working currently as HR BP and organizational development as well. So yeah, it's been a mix of roles at Engro, and yeah, that's about it. Beautiful, Umar. Thank you so much. Umar और मैं तकरीबन कोई 11 साल पुराने दोस्त हैं. उमर, if I'm not wrong, 2010 में या 2009 में हमारी दोस्ती हुई थी, जब उमर लाइसी में हुआ करते थे और मैं बेव्यू में हुआ करता था. So yeah, that's how long our friendship goes. एंड अच्छा जी, जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज वेल. कौन कौन हमें ज्वाइन किया हुआ है. मेरे पास यहाँ पे 2-3 कमेंट्स ऑलरेडी आए हैं. आई हैव Corina Zanner. She is a speaker, she is a leadership coach. She's joining us from Dubai. So Eid Mubarak to you as well, Corina, for being here with us. I have Farhad. Of course, he's saying hi to all of you, and one screen all his favorites. So that's the best part. And मेरी फेवरेट. अच्छा, बेस्ट. हमजा यूसुफ joining us. अच्छा हाँ उमर, बाय द वे मैं तुम्हें हमजा से मिलवाना चाहूंगा. हमजा तुम्हारा कहीं ना कहीं से डबल गैंग है बाय द वे. सो जब हम तो पहली बार मिले थे, और जब पहली बार फनवर्क्स इंटरव्यू के लिए आया था, समन मजहब मैंने इसका इंटरव्यू किया था, और तब हमें पहली फुर्सत पे क्लिक हुआ था कि ये पूरा उमर जैसा है बात करने में हर चीज में. जब फरहाद ने उससे इंटरव्यू किया तो फरहाद ने भी हमें यही बात खुद से बोली पहले से कि ये उमर जैसा नहीं लगता है. सो वी लुकिंग फॉरवर्ड करता हूं. मैं सर्च कर रहा हूं. Typical HR person, फौरन से गूगल और लिंक्डइन पे सर्च करना शुरू कर दिया.
सो राइट, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है जी। तो जी ईद का मौका है, तो पहले मैं ज़्यादा से शुरुआत में ही जो है ना, हम इतनी हैवी डोज बातें नहीं करेंगे। तो ये बताइए कि ये ईद कैसे गुजर रही है और कितनी मुख्तलिफ गुजर रही है। शहरियार, हाउ इज इट डिफरेंट? डिफरेंट तो बहुत है एक्चुअली। लेट्स से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक पैरामीटर जो हम लोगों को मेंटेन करना है, उसकी वजह से जो ईद का एक बस था वो ऑलरेडी आई थिंक बहुत डिम हो गया था। सो एवरीबॉडी वर एक्सपेक्टिंग कि किस तरीके से ईद होगी, क्या हम लोगों को करना होगा, नमाज के क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, मिलने जुलने के क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। सो ऑल इन ऑल मोरलेस हम वही सारे काम कर रहे हैं जो पहले करते थे, बट देखिए हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गए। फैमिलीज एक दूसरे के घर जा रही हैं, बट इतना कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। और एक जो फेयरलेसली जो एक गले मिलने वाला जो एक बज होता था, आई थिंक वो इतना मैंने देखा है, बट इतना नहीं देखा है गोइंग अराउंड द मार्केट जो देखा है मैंने बाहर। सो या मैं जिस तरीके से सारे लोग स्पेंड करते हैं ईद फैमिली के साथ, गोइंग टू इन लॉज अपने पेरेंट्स के पास, कनेक्टिंग विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो या pretty much Okay, same. interesting, interesting. Umar, how is it different this Eid for you maybe? Yeah, it's very different because personally, I am still not over what has happened in the past 2 months, and especially what happened with the PIA crash. So it's not like a like मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ जनरली, बट मैं कोई मतलब आई डोंट नो व्हाट टू, कभी कभी मेरे जो मीम्स भी आ रहे होते हैं, मैं थोड़ा कॉमेडी साइड लाइक जो लोग देख रहे हैं जो नहीं जानते हैं, थोड़ा कॉमेडी भी करता हूँ ऑन माई फेसबुक पेज। सो मैं मीम्स भी नहीं लगा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइक एम आई ओवर इट, डू आई स्टिल लाइक अभी ये माहौल ऐसा बना हुआ है। सो ओवरऑल आई डोंट थिंक इतना कोई सेलिब्रेशन मेरे दिमाग में है। इस ईद को मैंने बिल्कुल उस तरह नहीं देखा। हाँ, मैं नमाज पढ़ने गया, मैंने गाड़ी में बैठ के पढ़ी मस्जिद के बाहर, क्योंकि आई आई ऑल्सो फील कि ईद इज सेलिब्रेशन बिकॉज हम अपने एक महीने का पूरे रिचुअल्स ख़त्म करते हैं। एक महीना आप एक स्पेशल मंथ, सो you need to celebrate it. You need to call up your family, you need to call up your old friends, and you need to get in touch with them. At the same time, remembering those people who you've lost, and applying the learnings as well. So मेरे लिए तो ऐसे ही गुजरी। बाकी मैं पहले दिन आई थिंक ईद के बाद नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गया था। थोड़ा बात की जूम पे, हम फैमिली ने पहली दफ़ा बातें की, कभी हमने बात नहीं की एक दूसरे के साथ। अब जूम पे सब बातें करते हैं। लाहौर वगैरह बाहर पे जितने भी दोस्त वगैरह थे, फैमिली वाले थे। और उसके बाद से मैं बस अपनी बुक पढ़ रहा हूँ और यूट्यूब वगैरह के अपना कंटेंट वगैरह प्लान कर रहा हूँ। मुझे टाइम ज़ाया करना बहुत फजूल लगता है, तो मेरे लिए ईद ऐसे ही गुजरी है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। मोनिका, यू आर स्टक इन मुल्तान जब से लॉकडाउन हुआ है, एंड थोड़ा इसके बारे में बताइएगा और यही बताइएगा हाउ आर यू स्पेंडिंग दिस ईद। This Eid is very different than every other time. I used to celebrate it every year with my family and friends in Karachi. Actually, I had been away from Karachi since 2015. I've been to different cities. I was in Rahim Yar Khan in 2015, then 2016, then the festival 2017 or 18 till 19. I was in Lahore. But even though I'm away from home, I'm in different cities. But Eid ho gaya, Christmas ho gaya, Easter ho gaya. These are the occasions when I used to look forward to going home and celebrate it with my family and friends. So this saal, I was so looking forward for the time that I could go home. Neither I could go to Karachi on Easter nor on Eid. So that is why it's very very different and emotional for me in that sense. Eid का जो एक ऐसा, of course Christmas Easter पे तो होता ही है, but Eid की एक different feeling होती है when we are there, when we are with the loved one and family. So वो चांद रात पे निकलना और मेहंदी के स्टॉल्स देखना और रौनक और शॉपिंग, पूरी पूरी रात दुकानें खुली रहती हैं, हसल एंड बसल, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जा रहे हैं। तो आई एम मिसिंग दैट अ लॉट। और इस साल स्पेशली वो काफी अचानक से ईद हो गई है। डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि संडे को होगी या मंडे को होगी, तो वो अचानक से ईद आ गई सबसे पहले। बट बिफोर दैट ऑल्सो वो एक इमोशंस काफी चेंज हो गए थे, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड द होल सिचुएशन गोइंग ऑन, देन पीआई क्रैश हो गया। तो उस वजह से आई टोटली एग्री विद उमर के एक कंफ्यूज स्टेट में मैं अपने आप को एटलीस्ट शायद फील कर रही हूँ दैट डू आई नीड टू सेलिब्रेट दैट, या मुझे डू आई नीड टू मोर्न अबाउट द पीपल जो हमारे साथ नहीं है। But I am celebrating being alive, being with the friends and family, whoever is around me. So उसको I think हमने different angle दे दिया है celebration को।
Although Yeah. physically I'm not there with my family and friends, however, this has given me an opportunity to connect with people even more. Physically we are distancing, however we are socially, even emotionally even more connected with each other. Like अभी शरियार और उमर भी कह रहे थे कि हम लोग ज्यादा जूम पे कनेक्ट हो गए हैं, वो सारे Yeah. फ्रेंड्स और लोग जिनसे हम कितना कितना अरसे बात नहीं कर पाते थे. Like I'm talking to Sheryar after a very long time. तो हम लोग काफी उन लोगों से कनेक्ट हो गए जिनसे शायद हम पहले इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे. तो दिस इज द Yeah. पॉजिटिव साइड which this whole situation and this Eid has brought to us. Interesting, interesting. Thank you for sharing that. And again, that's question. This is the same question I'm asking my audience as well. How are you celebrating this Eid, and is it any different from the rest of the time? Now, I have seen both the versions where there are people who are maintaining the social distance using Zoom and everything, and I have seen the other part as well where people are like they do not care and they're out there. They are doing everything. They're doing, they're tweeting. So I'll give you a very interesting story. So I went to the mosque to pray for my Eid, and so the cleric Imam Sahib was like very particular that do not hug in the mosque. Do not hug in the mosque. He's like, whatever you want to do, do it outside. Do not hug in the mosque. So I met my cousin yesterday. He said in his mosque it was opposite. In Imam Sahib said, do not hug only in the mosque. Go out and hug the policeman as well. So लोगों ने एक्चुअली 500 लोग अब बाहर गए हैं और उन्होंने उन पुलिस वालों को झप्पियां पाई जोर जोर से, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, एंड पुलिस वाले लाइक दूर रहो, मैं मिलना है मिलो, हमसे दूर रहो प्लीज, हमसे दूर रहो. So both versions is happening in Karachi right now. So while this is there as well, of course, people who are watching us, please do tell us how are you celebrating this Eid. Corina, who's watching us, and Corina is not Pakistani, so she is saying she's a little bit struggling with our Urdu here. So Corina, I'm going to try my level best to Oh. keep on bringing English so that you also understand us. And मगर क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं, ईद का मौका है, उर्दू के बगैर अधूरा अधूरा लगता है. So let's continue. So what we can talk about, so the idea of this show and doing it on the third day of Eid is also because of the fact that we're going to resume work. Some people will resume tomorrow, some people will resume from Monday. So my first thing is that about a reflection of past 2 months of the lockdown. How's the working from home culture that has been developed by force and of course because we did not have any choice do it. How was it for you and your team? And how do you see the future? How do you see the very current, like, the immediate future? So I'll start with you, Umar. How this 2 months has been for you? And of course, since you work at Engro, and Dolmen was the first hotspot in the office world, in the corporate world, where, it was pointed out, it was spotted. So again, how is it for you? And how do you see the immediate future? ठीक है. एंग्रो के पास ये ऑनर है कि एंग्रो की वजह से सब कंपनी से बंद करना शुरू किया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ. So I think no one can take that away from us. But yeah, it was very different because I remember उसको 10 केसेस थे और एकदम से ऑफिस में केस आया और वो न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बन गई, ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई कि एंग्रो में हो गया. जिस तरह एंग्रो वालों ने जान पूछ के बंदा रख दिया था वहाँ पे, क्या था, लाइक उसको स्टिग्मेटाइज ऐसे कर दिया अगर किसी बंदे को हो भी गया. एक तो एंग्रो ने बताया है कि भाई हो गया, छुपा भी सकते थे, ऊपर से आप उन्हीं को सुना रहे हो कि यार आपके बंदे को कैसे हो गया. सो इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. एकदम से पूरा बंद हो गया कि मैं साइकिलिंग अगले दिन मैं वहाँ गया था साइकिल करने, तो सब ऑफिस ने ऐसा ऐसा बंद कर दिया था. एकदम से एक पार्किंग लॉट जो भरा हुआ होता था हर वक्त रात 10-11 बजे तक, वो एम्प्टी 10 बजे जो हमारा ऑफिस टाइम होता था. सो यार शुरू का एक हफ्ता वी वर लाइक यार अब क्या होगा, किस तरह काम होगा, हम लोग तो ऑफिस के बगैर काम ही नहीं हो सकता, मीटिंग्स नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकते. मुझे जूम का नहीं पता था ऑनेस्टली, मुझे ये भी नहीं पता था कि आप स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशंस पे काम कर सकते हैं, एक्सेल पे कर सकते हैं. ऑनेस्टली मैंने कभी किया ही नहीं उस पर. सो एक दो हफ्ते के बाद वी ऑल अडेप्टेड टू इट बिकॉज यूर लाइक हमें काम तो करना है. एंड जूम ने हर चीज़ रिप्लेस कर ली. और उस पॉइंट पे हमने रियलाइज़ किया कि मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला था, तो मैंने एक एस्टिमेट बनाया था. अगर आपकी 100 एम्प्लॉयज़ की कंपनी है और अगर आप ये सारे कॉस्ट जो आप मीटिंग रूम के, एडमिन जो स्पेस के, जो ऑफिस स्पेस के, बंदे के आने जाने के, कम्यूट के, बहुत सारे लोग एक मीटिंग के लिए ऑफिस जाते हैं जो 1 घंटा दूर रहते हैं कराची में, और ये सारे कॉस्ट भी लें तो आप महीने का 1 मिलियन रुपीज़ ऑफिस बचाती है. और इसमें मैंने बहुत सारी कॉस्ट ऐड भी नहीं की थी. सो जूम की वजह से मेरी पर्सनली एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई थी. प्रोज और कॉन्स दोनों है, मैं सिर्फ प्रोज बता रहा हूँ अभी.
मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई थी। जहाँ मुझे किसी से चीज़ें क्लोजर चाहिए था तो मैं सीधा इनवाइट भेजता था, ना मुझे मीटिंग रूम बुक करना होता था, ना किसी से फटे करने होते कि यार मुझे रूम दे दो, मेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर वहाँ पे मल्टीमीडिया सेटअप में 10 मिनट लगाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये था कि बस सीईओ भी और मैं भी और हर कोई बस एक मीटिंग में आए, जल्दी बातचीत की, ख़त्म की और ख़त्म हो गई बात। तो मैंने चीज़ें तेज़ होना शुरू हो गई। Okay. चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि लोगों को लगने लग गया, ऑफिस वालों को जनरली, कि यार अब आप घर पे हो, आपके कुछ करने को नहीं है, सो सही है आप काम करते रहो। सो बर्नआउट, पीपल मस्ट बी थिंकिंग यार अच्छा वर्क फ्रॉम होम है तो आप फारिग बैठे हो और कुछ करने को नहीं है, तो आप सो भी रहे होगे, आप टाइम भी ज़ाया करोगे। ऐसा नहीं था, बिकॉज रात को 9 बजे भी कभी कभी काम आ जाता था, तो फिर आप 10-11 बजे तक करो, बिकॉज और आपके पास क्या है करने को, ऐसा एक Mm, तासुर बना हुआ था। mm, So that's why there was burnout, and then we issued work from home guidelines. We adapted to it, and then it was mandated by the CEO that after 5:30 no meetings will be booked. You're not liable to respond to anyone, just like a normal office day. You're not liable to respond to anyone if they ask you for any work after 5:30, unless it's business critical or unless you really want to do it. मतलब आपकी अपनी mm. मर्जी है। सो ये अडेप्ट किया था हमने, अभी भी वो चल रहा है। अभी ऑफिस वापस आई थिंक मंडे से हमारे एंग्रो पे खुल रहे हैं, एंड Okay. 30% वर्क फोर्स पे हम लोग खुल रहे हैं। Okay. ओनली इफ इट्स एसेंशियल फॉर यू टू अटेंड द ऑफिस, एंड विदाउट इट अगर आपकी काम नहीं पूरा हो रहा, ओनली देन Mm. अटेंड इट। Okay. अब आपकी बिजनेस नेचर, अगर आपको ऐसा, आप सेल्स में काम कर रहे हैं जो आपको बाहर आउटडोर जाना है, या आप एडमिन में काम कर रहे हैं जो आपको ऑफिस स्पेस देखनी है, या तो फिर आप चले जाएं। अगर नहीं है तो आप क्यों रिस्क डाल रहे हैं? और हमें ये भी बताया गया है कि अगर आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या कोई भी घर में अफराद हैं जो ओल्ड एज हैं, तो आप ऑफिस ना आएँ, कोशिश करें कि आप घर से काम करें। So that's the update from this side. But yes, efficiency has increased. Okay. Burnout has also increased, but burnout हमने कम कर दिया because हमने work from home guidelines, and HR has obviously taken the initiative and ensured that these meetings are not held after 5:30. Mm. वर्क फ्रॉम होम गाइडलाइंस इशू करना सबको, वो एचआर ने इंश्योर किया था, एंड नाउ पीपल आर जनरली सेटिस्फाइड विद इट कि अच्छा सही है, काम चल रहा है। Interesting, interesting. And I guess I really like the fact that about the guidelines that you people have enforced, and what I have Right. been reading and what I've been hearing people is that के working from home के चक्कर में जो है ना घर बचा ही नहीं है, क्योंकि रात के 11 बजे भी कॉल आती है and we have to answer no matter वो कितनी छोटी बात भी हो. But I guess that's a great thing that you have done. Monica, what's the situation at your end? 2 months lockdown situation, and of course, what's the immediate future in your organization? How it's going to go? Yeah, to be very honest, last 2 months initially जब start हुआ था lockdown तो तब तो of course overall it was a very panic situation for everyone कि क्या होगा, कैसे होगा, how we are going to go about it, meetings, how we are going to do the meetings, business का impact क्या पड़ेगा इसके ऊपर, but slowly and gradually immediately I think we started this thing that we are going to do it work from home situation. And luckily in my organization, the good thing about it is that we are already very digital in terms of a lot of processes, be it remote or meetings and other things. So we prefer most of the processes to go digitally. Be it meetings or anything. So initially, yes, overall it was a panic situation, and for employees as well, काफी different questions आ रहे थे लोगों की तरफ से, sentiments बहुत different आ रहे थे. But we took it very positively, as Umar said also. We also been very vigilant about taking out guidelines and making sure that people are being, and especially the managers, line managers, are being very flexible in terms of the deadlines, because we do understand that however we are not coming to the office, has been reduced, people don't have to get up and dress up and travel from home to the offices, because for most of the people it's more than 1 hour drive from coming from home to office. So we understand wo cheez kam ho gayi hai, but it doesn't mean that we take things for granted and anytime we can just message them up and follow up ke cheezein ho jaye, because just because you are in the office. So there were different pros and cons of while we were working from home. Initially people took their own time to settle in with this whole environment and how we are going to work digitally. But for us at our organization, it wasn't more of a very big challenge, because we do have a policy of taking one working day as a work from home.
we call it death flex. So people can take a day off, not exactly a day off, but for one day in a week they can work from their home. And if they think they have some domestic work done, they can do it themselves, and they can be digitally available. So because of that, people were a little comfortable, because they know how they are going to manage the work during the lockdown situation. Still, there were challenges for meetings, and especially the field force who are out in the market. So there were a lot of guidelines how they are going to take care of their safety and health, and PPs ensure karna and everything, because majority in any organization, the sales team and the technical staff is of course out in the field and the market. So unke liye, yes, there was a bit challenge that everyone is sitting at home, they are not coming to office, but we have to be in the market. So वो initially challenge आया था, but with time I think what we did that हमने interaction काफी ज्यादा बढ़ा दी. We started having more virtual town halls with the people, so that they can be more comfortable and they can be updated all the time that how we are going to cope up with the situation. Beautiful, beautiful, Way beautiful. forward, yeah. As far as the way forward is concerned, we are also about to start from Monday. Not exactly the whole 100% population, but we are also going with the 70% population on alternate days. So we'll see the situation for after initial 1 or 2 weeks time, that how this is going on, because we don't want a lot of rush in the office at the same time. So what we are doing is we are going to have people on alternative days. Like if I'm going to office on Monday, then I won't be going on Tuesday, I'll be going on Wednesday then. So with the help of this alternate days activity, I think we'll be able to manage this situation. Interesting. So you're doing the alternate days, and also in the Yeah, alternate days, not the entire population of your workforce is gonna come. yeah, Few people will come. Is yeah, that correct? Yeah. yeah, Interesting. yeah, Interesting. yeah. Thank you so much for sharing that. Sharia, how's things for KFC, and how are you guys planning the very immediate future? Yeah, actually, if you look not just a couple of months back, I think right from the starting of the 2020. So as the name suggests, this whole year is about clarity. So I think disproportionate amount of disruption हमने देखी है टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में, इकोनॉमिक लैंडस्केप में, हेल्थ लैंडस्केप में. आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन बुश फायर से लेके कोबी ब्रायंट एंड सेलिब्रिटीज हैव डाइड थ्रू आउट द ईयर. एंड आई थिंक उमर एज मेंशन कि ईद से पहले जो ये बहुत बड़ा सामना हुआ. सो ये अगर आप इसको पूरे 6 महीने के या 4-5 महीने को इंकैप्सुलेट करें तो it's more about adaptation and acceptance to change, you know. So हमने Mm, change and adaptation at a very whole new level लेके गए. When mm, it comes to KFC, right starting जब ये जनवरी में आई थिंक वुहान में ये रिपोर्ट हुआ था. सो ये ऐसे ऐसे चीज़ें जो है ये न्यूज़ फैलती कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस इसलिए हो गए थे क्योंकि जिस बिल्डिंग में हम लोग हैं वहाँ पे लॉट ऑफ चाइनीज पीपल वर्क राइट. सो mm, हम क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस थे. सो बिफोर द लॉकडाउन आई थिंक 1.5 weeks, couple of weeks before हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी इंगेज कर दिए थे ऑल ओवर पाकिस्तान. सो हमारे जितने रेस्टोरेंट ऑपरेशन सेंटर्स है, रेस्टोरेंट सपोर्ट सेंटर्स है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में. सो वहाँ पे रिमोट वर्किंग वाज ऑन. सो आईटी हमारी जो टीम है डिप्लॉयड ऑल टेक्निकल मेजर्स जो टू इंश्योर के जो हमारी कनेक्टिविटी है विद आवर टास्क एंड विद आवर टीम इंश्योर. सो एमएस टीम्स वगैरह जूम पे हम लोगों ने बहुत जो है ना काम जैसे पहले भी करते थे, mm, स्पेशली व्हेन कनेक्टिंग विद द दुबई टीम तो हम जूम वगैरह बहुत यूज़ किया. बट लोकली हमने उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हम लोगों ने अवेयरनेस सेशन मैसिवली ऑल ओवर पाकिस्तान हमने रन किया. सो हमारे HR BPs हैं इन ऑल सेंटर्स. सो अवेयरनेस सेशन हम पहले रेस्टोरेंट सपोर्ट सेंटर्स में कराए एंड देन हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया हमारे रेस्टोरेंट में. HR BP से जाके ट्रेनिंग्स कराई. मैंने भी कराची काफ़ी रेस्टोरेंट्स में जाके ट्रेनिंग्स कराई. तो हमारी पूरी HR टीम, नॉट जस्ट मी क्योंकि मैं ट्रेनिंग को हेड कर रहा हूँ, आई थिंक पूरी HR की टीम हमारी जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में गई. सम वन ऑफ आवर एम्प्लॉय इज बेस्ड इन हैदराबाद. सो वो उसने हैदराबाद के जितने रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे जाके अवेयरनेस सेशन करा दी. So awareness sessions हम लोगों ने बहुत कराया. We were very quick to adapt. And rightly mentioned by Umer Farooqi के I think first one
Engro was the one जिसने work from home start किया था, but I think we were the second, third one जो कि already work from home कर रहे थे and still working from home. So there has been a lot of engagement since we have been into lockdown. We are seeing more sessions, more learning engagements. Employees are more connected than they were ever before. We just had our couple like a month back हमारी टाउन हॉल हुई जिसमें सीईओ ने तकरीबन 200 लोगों से ऊपर खिताब किया and so yeah, I think communication has been our competitive edge when it comes to KFC. Constant, clear, transparent communication from the higher management, and I think we were able to cope up with this thing. But still, now we are struggling, like in terms of क्योंकि हम पूरी वर्कफोर्स तो नहीं लेकर आ सकते अपने RSC सेंटर्स. So वही essential staff कौन बहुत बहुत important है. So we took a bird's eye view of our organization chart. What's essential, what's not essential. जो non essentials हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है work spaces में, I think वो work remotely करें. So finance के 2-3 लोग होंगे, एक supply chain का, क्योंकि हमारा business model is run on restaurant. So supply chain बहुत ज़रूरी है इंश्योर करना. So 2-3 लोग थे जो हमारे restaurant सेंटर में जो है वो काम कर रहे थे. Be it Corona, be it Ramzan. So because we have to support. So yeah, all in all, I think हमने उसको बड़े positive देखा है. But going forward, that I think the spread of the coronavirus determines कि हम इसको कैसे आगे tactfully handle कर सकते हैं. Interesting, and that's very true. And I guess we already have a lot of questions coming up, but there are a few comments that I want to show it first. The first is from Kavina. Again, Kavina is appreciating your point, Umar, where Engro is saying that after 5:30, again, and all that normal office hours. That's really great. Similarly, there's another point. Wait. Yeah, for you, Sharia, that is from Noman, and Noman is saying that, of course, that adaptability. I guess that's really great as well. Tufail, it's good to see you, Monica. Tufail is passing comments for you. Right, let's quickly go to the question. So I have a first question, and this question is from Zer Badsha. Zer Badsha is a dear friend and a very regular participant of Funverks program. So Zer is asking from me and all of us, how is everyone taking care of work-life balance? Technically work and personal professional life balance while working from home. May I also request Umar to share the guidelines of working from home if possible? Regards, Zai Badsha, head of HR BMA Capital. Umar, I'll pass this question to you first. जी सर, आई थिंक I've connected with him previously as well. वर्क फ्रॉम होम गाइडलाइंस मैंने पहले शेयर की थी अपने लिंक्डइन में भी, तो मैंने तो एज इट इज़ जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके जो हमारी वर्क फ्रॉम होम गाइडलाइन मैंने एक्चुअली वो बनाई थी, तो मैंने कॉपी पेस्ट करके लिंक्डइन में भी डाल दिया था. और जिन लोगों ने मुझसे सर डेफिनेटली आई कैन शेयर दैट विद यू, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यार उसमें इस तरह की चीज़ें थी कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू सजेशंस इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम देन लोगों को इट्स अ बिग चेंज फॉर पीपल. सो वी वर सजेस्टिंग देम कि यार आपकी मर्जी है, आपने तैयार होके लैपटॉप पे बैठना है या आपने बेड से उठ के डायरेक्ट बैठना है, दैट्स अप टू यू. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस कि आपको ऑफिस में आपको अगर स्क्रीन पे अगर आपको मीटिंग करनी है तो ज़रूरी नहीं कि आप कैमरा खोलें. लोगों के ये भी क्वेश्चंस थे कि यार डू वी हैव टू ओपन द कैमरा एवरी टाइम दैट वी आर इन अ मीटिंग, तो हमने वो भी लोगों को समझाया. तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक दफ़ा बात करें कि हाउ इज दिस गोना वर्क फ्रॉम नाउ ऑन. या आप एज्यूम नहीं कर सकते कि वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे एकदम से आउट ऑफ द ब्लू कि आज से मेरा बेटा घर काम कर रहा है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड. मेरे साथ ऐसा भी हो चुका मीटिंग में, पीछे से मैं सीनियर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, पीछे से अम्मी की आवाज़ है कि खाने में क्या खाना है. तो इस तरह भी मेरे साथ हो चुका. तो मैंने अम्मी को बैठ के समझाया है कि अम्मी आई अंडरस्टैंड कि आपका कंसर्न है, बहुत खुश हैं कि मैं घर पर हूँ, लेकिन मैं जब मीटिंग में हूँ ना तो प्लीज़ आप दूर आकर, उस एरिया से दूर आकर, मैं बहुत टेंशन में होता हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ. तो बहुत डिफरेंस है. पहले शुरू में लड़ाइयाँ भी हुई हैं इस बात पे कि यार किस तरह बात कर रहे हो तुम ऑफिस में, तो क्या हमने कभी काम नहीं किया क्या. नेचुरली एक जनरेशन गैप भी है, तो उनको नहीं समझ आएगा. हमें खुद नहीं समझ आ रहा, हम अब जाके समझ रहे हैं. तो ये गाइडलाइंस हमने लोगों को बताया था. फिर सबसे बड़ी बात थी कि यार बीच में ब्रेक्स प्लीज लें. ये मत सोचें कि 9 to 5 है तो आप बीच में ब्रेक्स नहीं ले सकते, आपने बहुत कमिटेड रहना ऑफिस के साथ, ये वो नहीं. क्योंकि ऑफिस में आप नेचुरली ब्रेक्स लेते हैं, चाय का ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट निकल जाते हैं, कुछ लोग सिगरेट ब्रेक के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ तो मॉल में चले जाते थे 15-20 मिनट, आधा घंटा. तो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. हम लोगों को बोला हुआ था कि भाई आपने 20 मिनट जाके पावर नैप लेना, पावर नैप लो, चाय पीनी है चाय पियो, कुछ और जो भी काम, शो देखना है शो देख लो, 20-25 मिनट को शो आपने देखना है.
तो इस तरह लोगों को बोला था कि अपना जस्ट मेक श्योर कि यू आर नॉट जस्ट वर्किंग, क्योंकि स्क्रीन टाइम में आप स्क्रीन टाइम का भी एक इशू होता है, जितना ज़्यादा आप स्क्रीन के सामने होते हैं उतना ज़्यादा आप वेयर ऑफ भी होते हैं, आपकी एनर्जी भी ड्रेन होती है। सो ये पूरी रिसर्च हम आहिस्ता आहिस्ता करते करते लोगों को बता रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये भी थी, आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन विद पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स, कि आप 5:30 के बाद यू नॉट लाइबल टू रिस्पॉन्ड इफ़ यू वांट टू वर्क, इफ़ इट्स वेरी urgent, if it's business critical. I also work on Saturday, Sunday sometime, but that's out of my own, out of my own will. It's not like my boss like you have to work and this is something that we all are working, so you also have to work. अगर मुझे लगता है बिजनेस क्रिटिकल एक चीज़ आ गई तो उसमें टाइम नहीं चाहिए होती, उसमें फिर आपको मैनेज करना होता है, वो ये आपकी कंपनी का लॉयल्टी होती है, आप उसको कर लेते हो। बट अगर मैं नहीं करूँ तो मुझे ऐसा नहीं ऑफिस में बोलेंगे अच्छा यार आप छोड़ दो ऑफिस, आप काम नहीं कर सकते। So, इस तरह की गाइडलाइंस थी विच मेड लाइफ वेरी इजी फॉर द एम्प्लॉइज। बट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो लिंक्डइन पे शेयर कर दूंगा। आई होप इट बिल्कुल आंसर्स। चेक कीजिएगा, एंड पॉसिबली अगर जो लोग चाहते भी हैं तो मे बी कैन राइट टू उमर ऑन लिंक्डइन, एंड उमर कैन आल्सो सेंड यू दोस गाइडलाइंस एज वेल व्हिच मे बी helpful for you as well. Shahya, you want to add something to this question, please? I think उमर ने pretty much इसको encapsulate कर दिया, but I think I'll add couple of things जो कि मुझे लगता है कि बहुत important है. So मुझे लगता है कि if you want to balance, if you want to have a balance between work life, you know, work from home किस तरीके से, so मुझे लगता है कि if you want to start your work, you need to gear up. So like first thing in the morning, जो Brian Tracy ने कहा था ना कि eat the frog in the morning. So that means जितने आपके जो difficult task हैं for that particular day, अगर आप उसको सुबह सुबह कर ले, बिकॉज यू आर एट द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल इन द मॉर्निंग, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी हाई होते हैं, सो यू हैव more chances of getting work done with accuracy and execution. So if you can dominate your morning, I think that would be really good. साथ साथ मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि यू कैन नॉट वर्क आउट, जिम नहीं खुले हुए हैं, सो मुझे लगता है कि वर्क रूटीन में वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है. सो इट कुड बी साइकिलिंग, इट कुड बी एनी बेसिक मोमेंटम बिल्ड करने वाली कोई एक्सरसाइज. It can be even a rope skipping. You know, rope skipping is like after a full-fledged exercise कर लिया. What it's going to do to you, I think it's going to help you a lot in having a clear focus towards your goals. Stress release कर देगा, जो especially आजकल मीडिया पे बहुत चल रहा है. There's a lot of noise in the media regarding this coronavirus. Fear की एक anxiety की एक फिजा है जो I think उसको हमें neutral करने की ज़रूरत है. And how we can do that, I think exercise is the best way to do that. Mindfulness, and especially if you have kids like me, working from home with a full family, I think is a bit challenging. But what I know is have clear-cut MITs for the next day tomorrow. Most important tasks आपको कौन से करने हैं tomorrow. And साथ साथ what I would suggest कि आप इसको वर्क ओनली एरियाज बना दें. आई थिंक ये पूरे 7-8 गाइडलाइंस मैंने अपने लिंक्डइन पे भी जैसे ये लॉकडाउन हुआ था मैंने शेयर की थी. सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप अगर आप इंश्योर कर दें अपनी डेली लाइफ में वर्किंग फ्रॉम होम, आई थिंक यू कैन हैव अ बैलेंस. अच्छा, एक और चीज़ में जस्ट बिकॉज व्हाट यू उमर एंड शेयर व्हाट यू गेट सेड, कहीं ना कहीं आई गेस इंपॉर्टेंट ये भी है कि ऑफिस के कॉलीग्स को भी समझाना है या फिर क्लाइंट्स को भी समझाना है, यू नो व्हाट आई एम वर्किंग फ्रॉम होम बडी. सो अगर बीच में अचानक से एक नॉइज आ जाती है तो इट्स नॉर्मल, राइट? ये भी हो सकता है, कैन दैट बी आल्सो हैपन, जैसे घर वालों को भी समझाना है. आई थिंक कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि कंपनी का कल्चर क्या है. टॉप डाउन बहुत ज़्यादा प्रेशर एक ऑर्गेनाइजेशन में, आई अंडरस्टैंड वो यही करेगी, बट आई कैन ओनली टॉक अबाउट KFC. तो हमें इतना ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि हम जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हार्ड ऑन लें. सो हमारी मैनेजमेंट की तरफ से इट्स वेरी क्लियर कि यू नीड टू मेंटेन दोज वर्क, जो एक आपके वर्क एथिक्स हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. So you need to produce results, you need to be effective, you need to deliver what जो आपके KPIs हैं. बट साथ साथ ये भी देखा जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी, क्योंकि घर पे काम कर रहा है, फैमिली है, मे बी ओल्ड पेरेंट्स हैं, मे बी सिक वाइफ, मे बी यू नो थिंग्स लाइक दैट. 360 डिग्री से इसको आई थिंक इसको एक जस्ट बिकॉज एक एम्प्लॉय वेलबींग के लिए है तो हमें इसको आई थिंक इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है. Very true. Monica, there's a question from Sahib Kareem that I want to ask to you. How much work from home do you foresee happening in your organization as a new norm? Would the frequency increase
And do you have plans to restructure your performance management accordingly? Second part actually तीनों के लिए सवाल. जी, I'll ask from Monica you, and of course I'm going to pass it on to Umar and Sharia for a second part. Thank you for asking this question, Saib. As I was mentioning earlier, that we at Jazz had been already a very digital organization. We do not believe in coming and sitting in one office. Like, we don't even have a proper office space and cubicles wala setup as well. So we work in an open floor environment. Anyone can sit anywhere. It's not like कि आप यहाँ बैठे हैं तो इधर ही बैठे रहेंगे, and office environment है. So it's very open for us even before the lockdown situation as well. So as I told earlier, also we do give people an option to work from home once in a week also. So people were very comfortable with the idea that, okay, when we are sitting at home, we are connected, we are available, and we can have a Skype meetings and Zoom calls while sitting at home. So people were quite aware and comfortable with the idea. And moving on, I do foresee that we would like to incorporate this idea even more. We are going towards the agile working environment. We do not want people to be sitting in one place, and 9 to 6 wala concept ke, and we don't even ask people to check in when they comes in. वो time in time out wala bhi scene nahi hai. Ultimately, what we want people to be comfortable, people want people to be more productive, even if they're sitting at home. If they feel like they can work better while sitting at home in that environment, so that's okay. So what I think the frequency will definitely increase, not only in our organization, overall as well. Even now, when we are opening the office, we are giving Fridays as a mandatory work from home. We are not asking them to come on to office on Fridays. And even if we are opening during lockdown situation, also those who wish to come to office, they could have, but with the safety precautions. So overall, I think organizations who were not very digital and who were not liking this concept of working from home, I think now by default or forcefully they have to come up with this idea of working from home. Even learning, I'm sure you must have aware about the digital platforms of learning. LinkedIn learning के ऊपर लोग जा रहे हैं, Coursera है, different digital platforms and training के भी. So I think we overall as a cultural shift जा रहा है towards digital, and moving on, I believe it will go towards work from home situation overall. Second question was, what do you have any plans to restructure your performance management accordingly? I think it's too early to comment on that, because performance management overall we were working on the KPIs and productivity. अब ऐसा नहीं है कि आपकी productivity इससे gauge हो रही है that you are sitting in the office from 9 to 6. You could be sitting in the office 9 to 6 and doing nothing, and you could be sitting at home and doing all the work. So it's not necessarily that we are going to gauge your performance by coming to office or working from home. So but maybe it's too early right now to comment on performance management. Right, too early to comment on the performance management. Sharia, Umar, what do you think? Performance management systems. कुछ change आएगा इसमें? Umar, you go first. Performance management for us is based on KPIs or our stretch targets और baseline targets, ठीक है. तो चाहे वो COVID-19 related, ये difference आया कि हमारे COVID-19 related targets बहुत हो गए, उसकी percentage बढ़ गई है. But as far as KPIs are concerned, our system won't change because अभी भी मेरा वही KPI है जो पहले था. इसकी वजह से difference ये है कि मुझे manage करना है virtually. मुझे ऑफिस में नहीं मैनेज कर रहा, मुझे अपनी चीज़ें अभी भी क्लोज करनी है, which I'm doing. Again, nature of job पे भी depend करता है. I can't say the same about sales people. I can't say the same about admin people. Nature of job पे depend करता है. I'm sure आप consultancy है उनका बहुत different होगा, हमारा बहुत different है, मेरा job nature बहुत different है. But as a system, we are not changing because system is there to stay. But yes, KPIs and objectives are going to change. Yeah, that's about it. The KPIs are changing technically. Interesting. Sharia, what's happening there? Yeah, I think first part of the question, work from home, do I foresee happening in my organization as a norm? Of course, yes, definitely. The one thing that this pandemic has taught us is to go remote. Number one skill that I think everyone, regardless of he's having a job or he's unemployed, recently lost his job maybe, but I think going remote
is the fundamental most important skills that you can offer to any organization or be it any business. So for example, you need to have for example, you need to look at yourself कि आपका skill set क्या है. So you need to double down on your skill set and find some interesting ways, some intelligent ways, how to get those work skills and those services remotely. How you can be the best valuable tactical asset of your organization by working remotely. So I can guarantee you that even if you lose your job or maybe recession के बाद, but you would be able to sustain a better opportunity in a different organization by working on this skill जो कि कोई remotely वाली skill. So मुझे ये लगता है कि वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्म. डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो घर से भी काम करोगे, ऑफिस से भी काम करोगे, बट वर्किंग रिमोटली इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एंड द सेकंड पार्ट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आई थिंक आई एग्री इट्स प्रीमेच्योर टू से, बट एंड स्पेशली डिपेंड्स ऑन कि मैं किस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. मैं एचआर में काम कर रहा हूँ तो मेरे डिफरेंट होंगे केपीआईज. मुझे एज सच कोई इतनी हिट नहीं लगी है इस पैंडेमिक से. सो मेरा काम इन पर्सन होने की बजाय अब ऑनलाइन हो गया है. इट्स डिजिटल नाउ. डिजिटल लर्निंग चल रही है, डिजिटल लर्निंग पे बहुत काम चल रहा है, ई लर्निंग, ई इंगेजमेंट पे बहुत काम चल रहा है. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, डिपेंड्स कि वो कैसे किस तरीके से इवॉल्व होती है सिचुएशन. बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक कि ये गोइंग रिमोट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट KPI in our performance management system. How you can operate working from home with the same output, delivery, and efficiency that you've been, demonstrating in the corporate office, and now this is what we've been expecting out of you from working from home. So Right. yeah, Right. Farhad has a comment for all of us, and would love to use this opportunity and request my friends to stop calling it work from home and lockdown. We, as in Funverks, now we call it performance freedom. So yeah, we in Funverks, we have been using this word now a lot, and it's performance freedom now. And कहीं ना कहीं से I guess this is how we're taking. अच्छा, there are more questions coming in as well, and मैं मुझे अफसोस इस बात के मेरे सारे सवाल रह गए. यूजुअली मैं 50% सवाल पूछ पा रहा था, इस बार मैं 20% से सवाल पूछ पाया हूँ, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन. मैं आप लोगों से कभी बात कर सकता हूँ. अच्छा, सवाल ये है, एडिन खान का, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, एंड आई लाइक टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद उमर, यू फर्स्ट. For many businesses, WFH, work from home, going well, and they are adapting to this change. But there are few of those who are so used to in their usual lifestyle that they feel lazy doing working from home. So, what would be some suggestions to keep them going the way they do in the usual working days and keep their productivity at same pace? I completely agree to that. बहुत सारे लोग हैं जो घर पे काम नहीं कर रहे, फुजूल बैठे हुए हैं. क्या करें उनके साथ? देखिए ज़ैन, हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस का सिंपल रूल है. अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप कंपनी को क्या, इफ यू आर नॉट एडिंग वैल्यू देन यू आर जस्ट गिविंग द कंपनी रीजन टू टेल यू दैट आइदर यू बक अप और यू लीव. एज सिंपल एज दैट. देखें, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आप ये लोग एक्सपेक्ट करना कॉर्पोरेट से कि यार आप हमें हमारे ख्याल रखें, हमारी जॉब इंटैक्ट रखें, आप हमें पालें, हमें पैसे दें, ऐसा नहीं होने वाला. पीपल नीड टू अडेप्ट. पीपल, अभी मुझे अपनी जॉब में भी वी नीड टू बी रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. अब बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी इन विच पीपल मस्ट हैव रियलाइज सडनली कि यार मेरी चीज़ तो इतनी रेलेवेंट रही नहीं है, मेरा काम तो वर्चुअल हो गया, या मेरा काम अब ऐसा हो गया है, इतना अभी इट्स नॉट द नीड ऑफ द बिजनेस राइट नाउ, आई माइट be laid off. It can happen. And if people are not serious about their own jobs and if they don't feel like working, so that's their choice. Maybe there needs to be another person who can add value to the business. पहली चीज तो ये है. So I, for example, अगर मैं एंग्रो की बात करूँ, यहाँ पे यहाँ पे है ही कल्चर अचीवमेंट ओरिएंटेशन का. हर कोई कंपटीशन में जो स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी कंपटीशन है कि यार अच्छा मुझे काम करना है, अगर मेरा काम पीछे रह रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, so they'll take some other work. So right now, if my work, I feel कि यार कोई एक दो projects हैं जो अभी delay हो गए, then I'll take up work related to COVID-19 because that's really important for the company right now. So first तो ये है. तो आपके जो employees हैं, if they're very अगर by intent वो काम ही नहीं करना चाह रहे तो फिर वो लगा चलें. फिर दूसरी चीज़ आती है कि यार चलो वो it's not their fault, they're not used to it. तो फिर वो इस वजह से काम नहीं कर पा रहे because they're not used to it. I think it has been 2 months. आप उनको आई डोंट नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पेसिफिक इशू की जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे. जो काम वो ऑफिस में करते थे वो घर में बैठ के वर्चुअली हो रहा है. लैपटॉप नहीं है उनके पास, क्या उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज द रियल इशू. बट आपकी जो उमर, बहुत सारे बिजनेस इररिलेवेंट हो गए इस वक्त. स्मॉल बिजनेसेस, ओके, सर्विस बिजनेसेस थे. लेट्स टॉक अबाउट इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज.
irrelevant हो गई है, नहीं हो सकती इस वक्त फिलहाल, और उनके पास इस वक्त इतने एसेट्स नहीं है या इतने पैसे नहीं है कि वो कंप्लीटली दूसरी चीज़ या फिर सैंड एज ना स्टार्ट कर जाए, now at these places, अब वो सारी चीजें चल रही है, I do not want to let go of my talent, I still have to pay the debts and the liabilities that is continuously rising, and yet the team is not performing, or the people and some team members are not performing. How do you take them with in this scenario, जहाँ वो ये बोलते हैं कि मैं काम करना जानता हूँ मगर फिलहाल काम नहीं है, so what do I do? What do we do with this? And this is for everybody to answer. Yeah, and मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा. So this is something I've been trying to cover on my YouTube as well, the webinars that I've done. देखिए, this is the rule, general rule of the world. कुछ industries की demand होगी, कुछ की नहीं होगी. The industry that we felt, for example, hoteling, traveling, उनकी बहुत demand होती थी, अब नहीं है. So they need to adapt. अब ये उनको decide करना है किस तरह adapt करना. अब Airbnb है, नहीं है उसकी demand अब. किसने 3-4 महीने पहले सोचा होगा कि अब उनकी ये हालत होगी. Booking.com, ये सब, they're all laying off employees. Air Canada, Emirates, जो भी हैं. अब मैं एग्जांपल देता हूँ. मेरा इवेंट मैनेजमेंट जो हमारे साथ काम करते हैं लोग, उनके एकदम से सब बंद हो गया बिकॉज एंग्रो के इवेंट्स नहीं हो रहे. सो दे स्टार्टेड डूइंग दिस डिलीवरी सर्विस. उन्होंने जो डिलीवरीज जो भी उनका है वो उस बिजनेस में आ गए. ये जो ईद बास्केट्स हैं, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू डिलीवरी, उन्होंने अपने लोग उस चीज में यूज करना शुरू कर दिया. नेचुरली हिट लिया है, बट एवरीवन इज वेटिंग. एंड अगेन फिर इधर कॉर्पोरेट्स का भी आता है कि हाउ दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. सो फॉर एग्जांपल फॉर एंग्रो, इट्स अ वेल नोन थिंग कि इन्होंने इंक्रीमेंट्स, हमने किसी को ले ऑफ नहीं किया, बट एट द सेम टाइम उसको इंक्रीमेंट जो है वो उन्होंने रोक लिया फॉर द टाइम बीइंग. एट द सेम टाइम ले ऑफ नहीं किया. बहुत सारी कंपनी ने ले ऑफ कर दिया. उन्होंने बोला हमें इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है, सो वी डोंट रियली केयर, बट दैट्स अ मैनेजमेंट कॉल दैट दे हैव टू टेक. आपका जो ईडन का स्पेसिफिक सवाल था कि दे फील लेजी डूइंग दिस, मैं अगर उस पोजीशन पे हूँ, आई हैव टू टेक अ डिसीजन, आई विल स्ट्रेट अवे टेल देम इफ यू आर लेजी देन आई एम नॉट नीडेड एट द कंपनी. आप इफ यू कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी राइट नाउ, यू आर नीडेड, बट अदरवाइज अभी यू डोंट नो कोविड-19 की अगली कोई म्यूटेशन आ जाए जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, 6 महीने का और लॉकडाउन हो जाए, हाउ आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? And at the same time, for people who are employed and who feel they're at risk or who have been unemployed, have you in the past 2 months worked on a backup? Have you thought कि मैं इसके अलावा, इस जॉब के अलावा किस और चीज़ से इनकम कर सकता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी अपनी स्किल यूज करके? Have you tried using YouTube channel? Have you tried writing online? Have you tried creating a blog or anything? So people, again, like Eden mentioned, I know people who are very lazy. I know my friends who like हमने ये करना है और कभी कुछ करते नहीं हैं. So I think it depends on the people as well. Corporate at the end of the day is there to earn profit. ये आप लोगों को realize करना है. बहुत कम corporates होते हैं जो actually they care about the people and they'll go to the maximum extent. I can say that about Engro. हमारा शुरू से ही यही रहा है कि यार किसी की तबीयत ना खराब हो जाए, किसी के सेफ्टी का मसला ना हो जाए, हमने ऑफिस ही बंद कर दिए, किसी को ले ऑफ नहीं किया. I don't know how many corporates are actually, जिस तरह जैन ने भी बोला, सबके पास इतने assets नहीं है, सबके पास इतने पैसे नहीं है. अच्छा यार, let's stick the employees with us. Let's see where we go. Even if we incur losses, we'll keep the employees with us. ऐसे नहीं करते corporate, उनको भी profit चाहिए. So at this point, अगर आप lazy होते हैं and you're openly saying कि यार मैं lazy हूँ, I don't feel like working, then you're not willing to adapt. And if you're not willing to adapt, then आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं. There's no one who's gonna save you. Sorry. Just adding with Zain, and मेरा सवाल भी शेरिया मोनिका के लिए, लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, कि अगर स्मॉल बिजनेसेस मौजूद हैं और आप टेक्निकली रेलेवेंट हो गए हैं इस करंट सिचुएशन में, Booking.com है, Airbnb, इतनी सारी एग्जाम्पल सामने है हमारी, एंड जहाँ पे इस एग्जाम्पल भी दी कि इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी ने कुछ दूसरा काम स्टार्ट कर दिया. अगेन लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंस रोल है खासतौर पे, एक तो अडाप्ट करने के लिए, और दूसरा ऐसे जो काली बिहेवियर मौजूद हैं टीम्स के अंदर जो शायद खुद काम नहीं कर रही और जो काम कर रहे हैं उन्हें भी डीमोटिवेट कर रही है. हाउ टू गो अबाउट दैट? मोनिका, आई विल आस्क यू फर्स्ट दिस. First of all, regarding this comment, people who are feeling lazy, I totally agree with Umar. I think अपने लिए खुद जो है पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे, they are preparing their own grave themselves, because especially in this current scenario when there is so much uncertainty everywhere, and performance management की अभी हमने बात की थी, structure तो change नहीं हो रहा, but I believe while we are working from home, accountability has increased even more. Because you're not there in front of your manager and in front of your bosses. So we need to be, as far as our ethics are concerned, accountability is concerned, we need to be more vigilant about that. And we need to prove ourselves to be useful even more.
because we don't know where the situation is going to be. Layoffs nahi hue abhi tak. We are thankful for that thing कि abhi nahi hue. But as Umar also said, that organizations also need to make profits. If they are not in losses right now, but they must definitely be making less profits as they were making before this whole situation. So कब तक कंपनीज आपको बिठा के खिला सकती हैं, या फिर आपको नॉर्मल सैलरी जैसे दे रही थी वैसे देती रहेंगी, या आप जो बेनिफिट्स अवेल कर रहे थे, you won't be able to avail all these things for a longer period if this continues for a more time. So we need to be making ourselves even more useful in this whole situation. I totally agree and understand, empathize to the fact that we were being lazy initially. I myself, if I give my own example, because I am living alone, I don't have family living with me. So when you know there is nothing else to do a whole day, you are not going out, you don't have anything to do, you don't have any family or friends se nahi mil sakte, you cannot hang out. So definitely you will be feeling lazy and anxiety, and you go in the dark place with the depression. So I understand it happens, but we need to be mindful about the fact that we have to be very, productive as far as the work is concerned. So those who had been feeling lazy और अभी तक भी वो यही सोच रहे हैं, तो my suggestion and feedback to them as यही होगा that they need to make themselves useful and productive moving on. Situation difficult hai, but we have to cope up with this whole scenario. As far as the leadership role is concerned, the organizations and companies who are in the business which is still relevant. I understand जैसे आप लोगों ने example दी, hotel industry है या airline industry है या बाकी event management या hospitality है, they are not as relevant as it used to be before, but there are still organizations who are still making profits and are very relevant. Telecom industry, FMCG, oil, and other organizations, they are still very relevant so far also. And we have to be mindful about the post COVID situation as well. Right now, those who are laying off then and there, I think that's a very short term approach which they are taking. Abhi situation difficult hai, but what about the post-COVID situation? There will be a Yeah. lot of new opportunities which are going to come. So we need to leadership and employees and individuals themselves. They need to prepare themselves for the post-COVID situation. The skills which they think right now they are not very, handful of that. Maybe some people are not very comfortable with digital. Those who are not comfortable with learning, yeah, digital platforms, yeah, virtual meetings and everything, so they need to prepare themselves to be more relevant, because when things get back to normal, even then it won't be the same as it used to be before. So new normal will be very different. So we need to prepare ourselves for that. The leadership has to take certain initiatives which can be helpful for the post-COVID situation. Learning platforms are going to change. There will be new KPIs for HR or HSE and other people managers also. Like safety के ऊपर बहुत ज़्यादा focus होना शुरू हो जाएगा. Even if the situation gets normal, अगर government says tomorrow that everything is normal, go back to the office and do the routine work, are we prepared for that? मतलब at least I won't be comfortable meeting everyone like I used to before. So हम psychologically कितने ज़्यादा उस चीज़ को देख रहे हैं उस तरह से. So नए KPI आना शुरू हो जाएंगे, safety measures different हो जाएंगे, mental health के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो जाएगा, because this whole time has impacted in different ways to us. It's not that virus affected the people; those only who are being affected by the virus are being impacted because of this. People like me, I am not being able to meet my family or my friends from so many months. So what impact it has given me on my emotional and psychological health. So there will be a lot of different opportunities which are going to come. So the leadership and people, individual themselves, have to prepare themselves for that. True that, and very beautifully explained. And there's another interesting comment on that, and I'll just show those. There are two, three comments actually that is relevant to what we are talking about. Corina is saying, "Yep." So Kavina is saying the people who are lazy at home are probably lazy at work as well. So yeah, and that actually speaks for itself. That whoever I'm talking about, whoever I'm hearing and reading about, I guess they are lazy at their work too. Also, Farhad is saying something very beautifully. He's saying that people need to literally need to understand that they write their own paychecks now. You know, Yeah. and जो आपने कहा कि accountability ज़्यादा हो गई है इस वक्त, and I guess that's completely makes sense right now that you're much more accountable now. Ajay, now we're talking about, now we use this word relevant a lot in last 5-10 minutes, and the next question is kind of relevant to that as well. And since Sharia, you look after training in OD right now,
how to encourage employees for virtual trainings in this COVID-19 so that their productivity must not go down. And also additional skills can also be learned during pandemic. I'll just add one more point to this question, and that is uh, that after lockdown, the post lockdown की हमने बात की है, as HR, what other skills are we expecting from our workforce when they come back to work? What extra skills are we expecting? So I'm going to ask this from Sheryar, and of course, I'm going to pass it on to all the panelists. ऑलराइट सो देखें अभी इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स चेक करें ना. फॉर एग्जांपल चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट चैलेंजेस आर दे फेसिंग. कंपनीज अभी कौन कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो फेस कर रही है. तो आई थिंक उनमें सबसे पहले जो बड़ा चैलेंज आ जाता है वो गोइंग डिजिटल है. यू नीड टू हैव दैट डिजिटल फुटप्रिंट present in the market in order to push down your product or services. So digital transformation, going remote, I think ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. तो ये तो एक टॉप मोस्ट स्किल है. ये आई थिंक मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में. एंड नंबर 2 जो मैं कहूँगा कि आई थिंक इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस स्लैश इमोशनल इंटेलिजेंस never been more important than ever. जो कि ये information intelligence and emotional intelligence. Let me explain why I'm saying information intelligence is important. You see, you have multiple avenues of sources of information coming in, जो कि inbound है, and you need to exactly redirect कि कौन सी information ठीक है. In order for me to make high level decisions, I need to have concrete information जो कि एक relevant information है. So information intelligence is going to be very important for me to in order to execute at the higher level, much better decision making. And साथ साथ emotional intelligence, be aware of your emotions, know when you are stressed, because work from home is very stressful. It's very hard on your nerves actually. So मुझे लगता है कि stress management and your relationship with the stress is going to be very important while working from home. And then secondly मुझे लगता है कि adaptability and flexibility. आप कितने adaptable हैं, learning on the go है या नहीं है. Do you fulfill the criteria of learning on the go employee? If can you learn something very quickly and apply this to your work? So learning on the fly is again a very good competency that we all need to work on. And I think work from home and especially lockdown के बाद ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें बहुत important रहेगी. साथ साथ मुझे लगता है creativity and innovation. That again said कि creativity and innovation ऐसे मैं नहीं सीख सकूँगा कि मैंने कोई certificate कर लिया, मैंने कोई training कर ली और मैं एक certified creativity and innovator हूँ. No, it doesn't work like that. आपका कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रीड करती है क्रिएटिविटी, क्या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ब्रीड करता है कि वो इनोवेट करें आपके एम्प्लॉयज़, क्या इतनी ट्रांसपेरेंसी ऊपर की तरफ से लीडरशिप की तरफ से जो है नीचे के स्टाफ को मिली हुई है कि वो करें. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मुझे उसमें इसको इनकलकेट करना पड़ेगा. बट या मोर लेस हमें मुझे लगता है कि ये 4-5 बड़ी स्किल्स हैं जिसमें हमें काम करना पड़ेगा. एंड गोइंग बैक टू द क्वेश्चन कि वर्चुअल ट्रेनिंग्स में लोगों को किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं. सो आई थिंक इट्स नो ब्रेनर. पर्सनल आप भी ट्रेनर हैं ज़ैन, आई थिंक आप भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेनिंग सेशन को एंगेजिंग करने के लिए क्या करना है. सो ऑडियंस साथ डिलीवरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कंटेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए. एंड एट द वेरी सेम टाइम बीइंग एन एम्प्लॉय आई नीड टू नो कि ये कितना वैल्यूबल है. क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, अप्लाई करने के बाद क्या कि कोई वैल्यू मुझे देगा या नहीं देगा. सो अगर मैं इसको अपनी वर्चुअल ट्रेनिंग में अगर इसको इंश्योर कर देता हूँ इन 3-4 एरियाज को, तो आई थिंक इट्स नो ब्रेनर. आई कैन गो एंड एग्जीक्यूट दिस ट्रेनिंग्स. येस ऑफ कोर्स लोगों की रेजिस्टेंस है, चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. पीपल आर नॉट यूज्ड टू ऑफ हैविंग दीज डिवाइसेस एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म. दे आर यूज्ड टू ऑफ यूजिंग दीज डिवाइसेस एज सोशल मीडिया या कॉल कर ली. सो पर्सपेक्टिव चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक देयर हैज टू बी कांस्टेंट हैमरिंग ऑन वर्चुअल ई-लर्निंग एंड slowly जो एक नया नॉर्म बन जाएगा, बिकॉज वो जो ऑलरेडी एक मॉडल है वो ऑब्सोलीट होने वाला है. सो पीपल डोंट हैव एनी चॉइस. If they want to learn, they have to go e-learning because it's all going to be digital. But one thing that coronavirus has forced us to do is to have digital transformation. Have digital transformation. That's very true. Umer, so I have been watching your LinkedIn posts and I've been reading your statuses where you have been talking continuously on are you really working on yourself, and are you really, so you're somebody who wrote that, you also told us that you read a book and you're working continuously on yourself. However,
people still do not do that. People are still not really bothered about that. As an HRBP, since you and Monica both you are HRBPs out there, what are you really expecting from people when they come back to offices? Let's say maybe from Monday, maybe from next month, maybe from 2 months down the line. What are we really expecting apart from the skills that they already had? So I'll ask with humor first, and then of course I'm going to pass it on to Monica. So, the skills that I will shortlist are the same actually जो शेरियार ने mention किए हैं. It's adaptability for me. Okay. At this point, हम जो भी resources हैं, चाहे HR में, चाहे sales में, चाहे finance में, we're all focusing on how to mitigate the effects of COVID on our business. So in any way how we can contribute to that, हम इस तरह इसको काम लेके जाते हैं. हमें adaptable होना पड़ रहा है. And this is not an excuse कि मुझे मेरा virtually मैं lazy हो रहा हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा या मुझसे meeting नहीं हो रही या etc. जो भी लोग excuses बनाते हैं, so we have to be adaptable. That's the first thing, and that's the first skill that people need to realize. Moving on, you can't be like ये मेरी JD में नहीं है and I'm not going to work on it because this is not what I'm supposed to do. If it's business critical and if you can contribute to it, if you can add value to it, आप अपनी employment का period बढ़ा रहे हैं अपनी company में. अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप resist कर रहे हैं, आप खुद ही अपने you'll soon get a letter from the office. ये मेरा मानना है. अगर people, if I know it's harsh to say this, but if people can realize this, and I tell myself the same thing. If I'm not adding value to my company, if I am not contributing, तो फिर it's not fair for me to be in the company and ask for money from the company. Simple सी बात. आप किसी को पैसे देंगे, कोई सर्विस आपके घर देने आए और वो कोई अच्छी सर्विस ना करे, आप उसको पैसे ही नहीं देंगे, आप उससे लड़ेंगे कि यार मैं नहीं, तुमने मेरा AC ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा. सिंपल सी बात है. So people don't realize this. Entitlement जो हमारे generally एक वहाँ में मैंने देखी है ना कि हमारा ख्याल रखो. Everything we need to be taken care of. चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो. एक तो ये है adaptability. Second, emotional intelligence. Emotional intelligence for me it's very important. This is something that obviously it's like controlling your emotions, how to react to different situations, how to react to crisis. I think crisis हमारी सोसाइटी में जनरली पीपल आर यूज्ड टू इट और हर थोड़े से बाद कोई ना कोई क्राइसिस आ रहा होता है, बट उस पर रिएक्ट कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है, वो एक है चीज़ जो एज अ सोसाइटी हम लोग शायद इतना मेच्योरली हैंडल नहीं करते. मैं जनरली बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज लाइक दिस. थर्ड इज बीइंग आई वोंट से टेक savvy but like being okay with going digital on everything. So I'll give an example. If we're talking about HR, हमारी हर जो मेडिकल क्लेम है, हमारा हर जो रीइंबर्समेंट है, वो एक पेपर फॉर्म में HR के पास, फाइनेंस के पास साइन होने, उनका बस SOP इस तरह का बना हुआ था, फिर 2-3 लोगों से साइन होना, फिर चेक साइन होना, फिर उसके बाद जाके आपको वो सारी चीज़, वो सब चीज़ें अब डिजिटल हो रही हैं. अगर आप नहीं कर पा रहे वो, देन यू आर हैम्परिंग द बिजनेस ऑपरेशंस. सो एवरीवन नीड्स टू बी ओके विद दिस. हम पहले इतना ट्राई करते रहे कि यार ये डिजिटल हो जाए चीज़, या हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं. बहुत सारी कंपनीज ऐप पे चली गई कि यार वहीं रीइंबर्समेंट आई, वहीं हमने भेजी मैनेजर को, उन्होंने ओके किया, वो चले गए. अब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अब ये सारी डिजिटल हो रही हैं. हमारे राइडर्स हैं, वो चेक किस तरह हैंडल कर रहे हैं, ये सब एवरीवन इज लर्निंग. दोज हु आर नॉट लर्निंग, अनफॉर्चुनेटली उनको कभी ना कभी मार खानी पड़ेगी. एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप इन द ऑफिस. बाय एंटरप्रेन्योर यू कैन से इनोवेशन एज वेल. सो आपकी एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी कितनी है, आप नई चीज़ें अभी क्या बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन आवर ऑफिस देयर इज अ पर्सन हु वर्क्स इन पब्लिक अफेयर्स, बट ही इज इन द वर्किंग कमेटी फॉर जो सेंड आउट जो प्लेज है, द फंड फॉर 1 बिलियन रुपीज़, वो उसकी वर्किंग कमेटी में है. ही इज इंश्योरिंग के मास्क सही तरह इंपोर्ट हो जाए, ही इज इंश्योरिंग के सही तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. उसके काम से वो ताल्लुक भी नहीं है, बट वो अपना प्रोजेक्ट सोच के बैठा है. वो कह रहा है मैंने इस तरह कंट्रीब्यूट करना है कंपनी को और कंट्री को इस तरह. So these are the skills that people need to be sure of. And सबसे बड़ी बात आई थिंक अडेप्टेबिलिटी है. ये जो हम बातें कर रहे हैं, शायद 1 महीने बाद कोई ऐसी सिचुएशन ग्लोबल हो जाए, खुदा ना खास्ता वॉर हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई और पेंडेमिक, कोई और इसकी म्यूटेशन बन जाए, COVID-19 की कुछ और. So we need to be prepared for it. We can't be like यार I wasn't hired for this, I didn't sign up for this. ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते. और अगर आपको बहुत इशू है अडेप्टेबल होने में, then you can start your own thing. I think अगर आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस यू नीड टू बी श्योर व्हाट द कंपनी रिक्वायर्स. कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वेल एंड गुड. इफ यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक इट इजी फॉर योर मैनेजर. इफ यू आर नॉट मेकिंग लाइफ इजी फॉर योर मैनेजर,
then you're not आप don't expect to be rated highly in the office as well. एक और चीज़ वर्चुअल ट्रेनिंग पे सॉरी बात हो रही थी, उसको स्लाइटली मैं टच करना चाहूँगा. हमारे यहाँ पे वर्चुअल ट्रेनिंग मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, मैंने 3-4 साल लर्निंग एंड ओटी में काम किया है. एवरीवन डजंट डिजर्व ट्रेनिंग. ये चीज़ मैंने सोच लिया है. मैं हर बंदे के पीछे भाग के आप ट्रेनिंग कर लो, आप ट्राई टू upskill yourself, try to learn new things. It will help in your promotion, it will help in your career development. Not everyone really cares about training. I have realized this. So हमने जो virtual training हमारे Coursera के साथ हमारा एक partnership है, so we have only given it to 30% employees right now, and we're making it an exclusive club कि यार you have all access to it. Go learn whatever you want to learn, and we've selected the people carefully, and then we're telling them कि यार आप learn करो, and then we'll ensure that this is tied to their performance management. बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग जब तक उनको वो रिवॉर्ड नहीं दिख रहा होता वो उस चीज़ पे काम नहीं करते. एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इतना यूट्यूब पे फरहाद के साथ भी मैंने वेबिनार इस चीज़ पे किए हैं, मैंने जनरली भी किया है, लिंक्डइन पे भी डालता रहता हूँ. टेलिंग पीपल टू लर्न न्यू स्किल्स, टू अपस्किल देमसेल्व्स, टू बी रेलेवेंट. ट्रस्ट मी, पीपल डोंट वांट टू मेक एन एफर्ट. आई हैव सीन जनरली पीपल डोंट वांट. बहुत कम लोग होते हैं वो एक्चुअली मेक एन एफर्ट. मैंने सीवी राइटिंग के ऊपर होता नहीं 2-3 वीडियोस डाल चुका हूँ, उसके बाद भी लोग मुझे ईमेल करते हैं सीवी या मैसेज करते हैं, यू चेक आवर सीवी एंड यू टेल मी एंड देन यू एडिट इट एंड देन यू सेंड अस बैक. मैं उनको बोलता हूँ भाई मैंने वीडियो बनाई है इस वजह से so that you can go through the process. No, you do it. So ये लोगों का एक परसेप्शन है कि यार आप, फिर वो लोग कुछ मुझे लिंक्डइन पे भी लिखते हैं आपका फायदा क्या है लिंक्डइन पे होने का, आप कर तो नहीं रहे कुछ. मतलब भाई मैं आपको समझा तो रहा हूँ ये कर लो, अब आप खुद थोड़ी मेहनत कर लो. नहीं, आप करके दो. सब ये मेंटालिटी है दिस. और जो इस चीज की मेंटालिटी को ओवरकम कर लेता है, उस ऑपोजिट सोचता है, मेहनत करता है, वो सक्सेसफुल है. चाहे कोविड-19 हो, चाहे दुनिया में कोई भी क्राइसिस हो, दैट पर्सन विल बी सक्सेसफुल. वो अडेप्टेबल है. जो इस तरह के लोग हैं कि नहीं हमने किस तरीके से दूसरे पे चीज डालनी है, हमने काम नहीं करना, हमने नहीं सीखना, हमारे तो बचपन में ये नहीं बताया गया, दे आर डूम्ड. Wow, that was interesting and that was really nice. And I love the fact what you just said, Umar. As a trainer, I completely agree with that. Not everybody deserves a training session. Some people, and not everybody is, what do you call that? The theory X, theory Y. Some people work on theory X. वो डंडा चलता है और डंडा चलाना पड़ता है कभी कभार. अच्छा, Jamil Janjua, a very senior resource, is here. He's watching us and he has asked a very beautiful question. And again, I'm open to all any of you can answer this question. Introvert versus extrovert. Who will be better off in this post-pandemic age? Monica, you want to comment on that? Who will be better off in the post-pandemic digital age? It depends that how the organization is going to take it. Because if you are an introvert, I think this current situation is very ideal for the for the introverts because they don't have to interact with a lot of people that much. So I think it will be beneficial for both of them. In that sense, that introverts can continue doing what they had been doing, and extroverts will be very delighted to go back to the situation how they had been before. So they can come up with the new ideas, and they can will be very excited to meet their old people after this whole post-pandemic situation. बिकॉज इस सिचुएशन में उनको ज्यादा मौका नहीं मिला इंटरेक्ट करने का, सोशलाइज करने का, तो आई थिंक वो सारा कुछ जो जमा हुआ होगा उनके पास, तो वो उस सबको निकालने के लिए दिल कम अप विद ऑल द न्यू आइडियाज व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड विद दिस पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन. Interesting. Shaya, there's another question by Fahad Hussain, and Fahad is actually asking, how about focus and concentration as skills too? Proper skills. एब्सोल्युटली फहाद हुसैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फोकस एंड कंसंट्रेशन. देखिए फोकस एंड कंसंट्रेशन ये पैंडेमिक हो या ना हो, ये डजेंट मैटर. फोकस एंड कंसंट्रेशन ये तो बेसिक एंड प्राइम स्किल है in order to execute anything you want. Even if you want to go and have a cup of water or a glass of cup of tea or glass of water, आपको फोकस चाहिए. You need to focus on कि मैं जाऊँगा, ये काम करूँगा, ये करूँगा. And same goes to concentration कि if I'm in the process, तो मैं concentrate करके अगर process को follow नहीं करूँगा, तो definitely it's not going to be efficient for my work. So yeah, focus and concentration always, मतलब not just pandemic, I think ये evergreen skills हैं, ये आगे भी चलती रहेंगी. But focus and concentration को मैं I think emotional intelligence में ही ले लूँगा, where you are aware of where your focus is, where when you are aware कि आप emotional हो या emotional नहीं हो, you have aware of your own
7 प्राइम इमोशंस, जिसमें आपको पता है कि यार मैं अगर गुस्से में हूँ तो मेरा फोकस बाहर हो जाएगा, अगर मैं इफ़ आई एम सैड तो मैं शायद कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगा, अगर मैं डिप्रेस हूँ तो मैं शायद आई वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस at a higher level. So I think yes, focus and concentration. Yeah, already it's a good skill. Right. So then another signatory, Lawrence Anthony, has also joined us, and Lawrence Anthony is actually asking. So his question is divided into two parts. How can we, as trainers, coaches, speakers, HR professionals, can come together and delete our sowing egos, arrogance, and selfish nature to learn from each other and do something together for a better Pakistan and create a culture of learning and development in Pakistan. What is your opinion about this? Umar, you want to take? You want to start? I think the best way is this, the what we are doing right now. So the मतलब पहले इसको conference बोलते थे कि we'll call everyone at a conference, we'll call people in, and then we'll get a panel, and then people gonna listen, and then they will learn. Now it's very different because मैंने I think 10-15 speaker sessions किए हैं, webinars जो मैंने किए हैं on YouTube. So I had one with Farhad as well. I with other speakers and trainers as well and Yeah. professionals. Yeah. I think मैं वो learning जो मैं उसमें से मुझे खुद मिली और जो लोगों को मिली है, the response that I got, that is something that is there. So like people can collaborate. अब किसी को अगर if someone has an ego issue, if someone has whatever issue relating to it, so they might not join. But I'm sure 20% ऐसे लोग होंगे. फिर 80% आपको कोई ना कोई मिलेंगे जो कहेंगे नहीं यार, for the betterment of the society, let's just join hands and do something. And so I think this is the best way to go about it. And in the future, अगर कभी मौका मिलता है, then conferences I think are great because then you can meet people physically as well. तो आप उनसे learn कर सकते हैं. But abhi for this period, I think someone needs to take an initiative. So for example, if Zain, Farhad, you guys are taking an initiative, you're connecting with people, कि अच्छा आए अपने views share करें, that's brilliant. Not a lot of people are doing this. And if you can get other experts as well, whether from Pakistan, whether from abroad, people are going to listen. जिसको सुनना है उसने सुनना है. And that's the best way to go about it. I personally feel most Beautiful. efficient, economical for people. Free है मतलब economical क्या? And yeah, मतलब इसमें आपकी कोई effort नहीं लग रही, आपने camera on करना है and you just need to talk. Yep. 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 Sharia, what do you think? Since we have been working with all of us, so what do you think? Yes, I think ये मुझे नहीं लगता कि कोई egos ऐसे हैं within these trainers. I've seen Sohail Zindani engaging Farhad and Farhad engaging Sohail Zindani, and Kamran is engaging the Umer Jaliwal and Umer engaging, a lot of trainers. So I don't think कि ऐसा कुछ problem है. But I'm more of a why kind of a guy rather than what guy. What should these trainers be doing? I think why we should be doing. Important question कि हम क्यों करेंगे काम. So क्यों करेंगे काम बहुत important है. कि सारे ट्रेनर्स जितने भी हैं ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं. आई थिंक इसको और बूस्ट अप कर सकते हैं कि टू कम टू अ कंक्लूजन पिवट करके कि यार यही 4-5 चीज़ें जिस पे हम बात कर सकते हैं. दैट कुड हेल्प पीपल, कॉर्पोरेट सेक्टर को, जर्नल पीपल को, स्पेशली जो घर पे जो वर्किंग स्पाउस है उस तक के लिए कि वो भी अगर ऑनलाइन आकर अगर देखती है तो उसके लिए क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर हर. So not just कि corporate sector के लिए, I think ये these trainers have been talking about a lot of multiple subjects. So I don't agree with ego. Definitely no ego. I don't see any ego. All I see is positivity, and the way to go forward is to address the why rather than what. मुझे लगता है कि why is more important and we need to highlight why. So why के लिए हमारे पास बहुत सारे reasons हैं. Pandemic है बहुत बड़ा. जो सोशल इश्यूज हैं हमारे पास और भी वो बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं. तो आई थिंक रीजंस हमारे पास बहुत हैं. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. Interesting. Kavina is saying that yes, bring me to Pakistan as well. So Kavina is somebody who works on the stress, and she's somebody who's worked on anxiety, managing anxiety. She is a coach. So of course, Kavina, yes, you're more than welcome to be with Pakistanis, and of course, since Umar is also here hearing you, so of course, Umar, you can also connect with Kavina. Wanted to give this, so she has been with us on BIZVERDS as well. Noman brought her. So, well, that is the case as well. And since a lot of us have been talking about reading and learning, and it's a proud moment for me to announce that since we started off with BIZVERDS, and I remember the first episode that we did was on 29th of March, where we first did our
first BizVerds webisode. And again, I brought people. So I had somebody from Gul Ahmed, I had somebody from Per Zelsis, I had somebody from Martin Dow, and we started the whole conversation. And of course, we have been doing this. Another thing that we're launching from tomorrow onwards, and you all of you would like it because all three of you are avid readers. That is what we call the Bibliophile Circle. So the Bibliophile Circle is where it's like a book club. So we're going to discuss books now, and we're going to bring the authors of those books now, and we're going to bring those writers or the sub-writers of those books now, and we're going to talk about those books too. So, Let's do it. yep, and that's how we're going to take some professionals. So, for example, it could be one of us as host, we could be the author, and it could be few of us as guests who talk about how they have implemented the learnings from their book into their organization or into their career or into their CV writing maybe. So that's what we're doing. So people who are watching us, please do join us tomorrow at 4 p.m. As we have a first episode of our Bibliophile Circle before, and it's been 15 minutes extra, but we have been talking. I would like to have your closing remarks first, and then of course I'm going to end our program. So I would like to start with you, Monica, your closing remarks to the entire conversation and the way forward into post-lockdown, hopefully, in few days. Please, Monica. I think this whole situation actually made us do some self-reflection for all of us, be it with family or anyone else. I think those who haven't, I think still they have time to do some self-reflection and be mindful about a lot of things, and take out all the grudges which they have in their heart, because you never know what tomorrow is going to be. पिछले 2 महीने पहले तक हमें नहीं पता था कि हम इस सिचुएशन से भी गुजरेंगे. So we don't know what tomorrow is going to bring to us. So be very mindful about all these things. Stay positive. Try to create more happiness around you. Try to remove all the grudges and negativities which are in our heart, and create more of positivity inside you. Self development के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें. Way forward में we don't know what is going to be tomorrow. So be more vigilant about your own self, about the people who are closer to us, those who are our loved ones, and overall try to think through and see through things. So that's all what I'm going to say. Beautiful, Monica, Shaya, I pass to you. All right. मुझे लगता है कि closing remarks and especially the way forward for anyone who's watching. What I think is कि going forward, we need to be very adaptable and just watch out the landscape. Business landscape को देखें, technology landscape को देखें, especially अपनी health को consider करें कि being in this health of state, in this state of health, how can you be the best version of yourself? How can you be the best employee of your company? How can you be the best businessman? How you can be the best trainer? How can you be the best HR VP? How you can be the best of anything? And the way you can do that is by being vigilant, as Monica said, being very adaptable. Change को देखें, foresee करें, and just learn from your mistakes. देखें कि trajectory कहाँ जा रही है. वायरस कंटेन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं. Be very tactical and be very open to change. Not कि बस अच्छा ये न्यू नॉर्मल है तो अब मुझे इसी में एडजस्ट करना है. हो सकता है कि कोरोना वायरस 2.0 आ जाए, 3.0 हो जाए. What you gonna do? You gonna do the same thing? No. So there are no. मुझे लगता है कि कोई anchors नहीं होने चाहिए to hold you down. You need to have a growth mindset, especially in times like these. जब pandemic है, so you need to have a growth mindset. You need to be open to आपको अपना horizon build करना, आपको अपना horizon और broad करना, and be adaptable. इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें, स्ट्रेस्ड आउट ज़्यादा ना हो, वर्कआउट करें, हाई स्ट्रेस रिलीवर है ये, न्यूट्रिएंट्स पे काम करें, डाइट, टेक गुड डाइट, बी अ हाई परफॉर्मर. If you can become a high performer, especially in these times, I think जब हम economy जब bounce back करेगी, so you will have a competitive edge over the others, especially over the peer. So I think you need to work on that, especially in lockdown के scenario में आपको किस तरीके से you can emerge as a true potential. Beautiful, Sharia. Thank you so much. And of course, be adaptable and see the landscape. That's the word. Umar, your closing remarks to all those people who are watching us. Yeah, adding on to what Monica and Shayar beautifully put out, adaptable hona, emotionally intelligent hona is very important. But again, I would like to request people to
sit and think how are you adding value to the world and to your company. पहले तो आप ये सोचें कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है उससे दुनिया को फायदा क्या हो रहा है. मैं मतलब एक्चुअली शायद आपको सोचने के बाद ये लगे कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं सिर्फ दुनिया में नेगेटिविटी फैला रहा हूँ या मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहा. ऑनेस्टली अगर आपको लगता है आपको अच्छा काम कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं कर रहे तो फिर करना शुरू कर दें. मतलब ये रियलिटी आती है सबको कभी ना कभी कि यार अच्छा मैंने क्या मिस कर दिया है. देखें ये क्राइसिस है, दुनिया में जो भी बड़ा इंसान बनता है वो कोई क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी देख के बन जाता है. ऐसे भी होते हैं. ऐसा हर कोई अपॉर्चुनिटी, हर कोई जब हर चीज बैलेंस्ड होती है उसी में से बड़ा इंसान नहीं बन रहा होता. सो व्हेनेवर यू फॉल डाउन यू राइज अप, यही होता है. सो ट्राई टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. अगर वो ग्रोथ माइंडसेट का जिसने शहरियार कह रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से सोचें कि इसमें से क्या मैं कर सकता हूँ. हर चीज में से कोई ना. अब इस पेंडेमिक में भी आई नो पीपल हु स्टॉक मार्केट नीचे गिरी उन्होंने उसमें भी पैसा कमा लिया. आई नो पीपल, आई नो इंडस्ट्रीज जो एकदम से चलना, जब ये टेक इंडस्ट्रीज हैं ग्लोबली. आई नो ये जो अभी कल ही आर्टिकल आया था, बिलियनियर्स, अमेरिकन बिलियनियर्स हैव मेड $400 billion इन दिस पेंडेमिक. क्योंकि वो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ये सब इन्होंने बना लिया. एंड आई नो पीपल अभी भी पाकिस्तान में बहुत पैसा कमा रहे हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग पैसा कमाना इज द अल्टीमेट गोल. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट आउट कि वो इस क्राइसिस में से अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं. अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने आई हेट बीइंग ऑनलाइन फॉर लाइक 1 घंटा 2 घंटा ये सेशन करना. मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता. क्या मैं हमेशा 6 मिनट की वीडियो बना के यूट्यूब पर डालता था. सिंस द टाइम दिस स्टार्टेड पेंडेमिक, तो मैं पता नहीं कितनी, आई थिंक 30 to 40 वीडियोस ऑफ ऑन एवरेज 1 hour ईच ये मैं डाल चुका हूँ. एंड दिस इज समथिंग दैट आई लर्नड. आई नेवर न्यू StreamYard होता था. आई नेवर न्यू कि आप लोगों को गेस्ट बुला के उनसे बात कर सकते थे. आई एम जस्ट इवॉल्विंग एंड आई एम श्योर एवरीवन इज इवॉल्विंग राइट नाउ. दोज हु आर इवॉल्विंग दे विल बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर. आप लोग अगर इवॉल्व नहीं कर रहे, आप लोग चिल में बैठे हैं, ट्रस्ट मी आप अपने भी नुकसान कर रहे हैं, अपने चाहने वालों का भी नुकसान कर रहे हैं. सो प्लीज एंड ट्राई टू लर्न एनी स्किल दैट यू कैन. थोड़ी रेलेवेंट अगर स्किल हो तो ज़्यादा अच्छी बात है. बुक्स पढ़ें. अभी रिसेंटली मैंने वो आई एम श्योर बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी. तो मुझे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली जो कि मुझे शायद बहुत पहले पढ़ लेनी चाहिए थी. सो प्लीज ट्राई टू मतलब आपको ना टेंशन होनी चाहिए यार मैंने कुछ सीखा है या नहीं सीखा आज, या मैंने इस हफ्ते कुछ सीखा है या नहीं सीखा. इस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए, रादर देन बीइंग लाइक यार चिल में बैठो, लाइफ चल रही है. और डोंट ब्लेम एवरीथिंग ऑन सोसाइटी, डोंट ब्लेम एवरीथिंग ऑन क्या ये अल्लाह की मर्जी है. आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपना स्किल बढ़ानी है, एंड देन गॉड भी आपका ख्याल रखेगा इंशाल्लाह. Inshallah. And of course, with that note, thank you so much, everyone, for joining us. Thank you so much, Shahriyar, for accepting my invitation once again. Thank you so much, Monica, for taking out time. And thank you so much, Umer Farooqi, for taking out time. Especially Eid के दिनों में आप लोग सब में time निकाला. And I'm sure आप लोग सब, I know बहुत सारे लोग socially distant होके घर पे मना रहे हैं, अगर फिर भी एक time होता है, मगर आप लोगों ने इस Eid edition को accept किया. Thank you so much. And while that is there, thank you so much to everyone who's watching us कि आपने हमें time दिया और आपने एज यूजुअल बिजवर्ड्स को सपोर्ट किया है. हम कल फिर हाजिर होंगे हमारे नए प्रोडक्ट बिब्लियोफाइल सर्कल के साथ जो नुमान नसरुल्लाह का लीड करेंगे. स्टे कनेक्टेड विद अस इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम on our Funverks either Facebook page or our media YouTube channel. So please do not forget to subscribe and press the bell icon. I'll see you very soon. Take very good care of yourself. And of course, thank you so much once again, Sheryar, Monica, and Umar. And with me, we all are signing off. Eid Mubarak to you once again. Take care of yourself. And the way forward is there. It's up to you whether you want to take it or not. Thank you so much. Take care. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.